One of the biggest stories of India's economic history in recent times. It's also one of my biggest stories. In 1991, there was some idea of the trouble in the finances of the government. I got a tip-off. There was something happening at the airport. There was a large, unusual aircraft parked there. There was a sense of something was going wrong. Prices were skyrocketing. The economy was in deep trouble. People were concerned about how India will navigate through this economic crisis. 1991, the RBI became into public view as an entity which had a strong hand to play in the management of the economy. The Reserve Bank of India did what was necessary to bring about some fundamental changes in the Indian economy. It was, of course, a difficult decision, but it was absolutely unavoidable. $21,000 kilos of precious metal was being shifted. I would say at all levels, from the top to the bottom, the integrity of Reserve Bank of India has never been questioned. Larger than life, ख्वाब इंडिया के पूरे करें हम, भरोसा हमें। आरबीआई कहता है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एड्स में कहीं ना कहीं ये नाम देखा सुना होगा। इस कुमार फैमिली की तरह हर घर, हर परिवार, हर इंडियन की रोजाना की बातों में आरबीआई का जिक्र कम होता है, मगर इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आरबीआई के काम का असर जरूर दिखता है। पिछले हफ्ते का कलेक्शन बैंक में जमा करा दो। अरे दादाजी, ये सारे बोरिंग काम मुझे क्यों करने पड़ते हैं? दुकान पे तुम बैठते नहीं हो, नौकरी तुम्हें कोई देता नहीं है, बोरिंग काम। ठीक है, करवा के आता हूँ। तो कुमार परिवार की तरह ज्यादातर लोगों को कोई अंदाजा नहीं कि आरबीआई है कौन और करता क्या है। आज पहली बार लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ आरबीआई। You see this 50 rupee note. So what actually brings value to this note is a promise that the Reserve Bank holds for the bearer of this note, that this will have value, that this will be acknowledged and used. This is otherwise, just a piece of paper. I think this is the most common touch point that people have with the Reserve Bank of India. You see, every country has a central bank. The Reserve Bank of India is the central bank of India, which is entrusted with the responsibility of managing the currency system. Printing and distributing currency is what most people associate the RBI with, but RBI does a lot more. The central bank decides the monetary policy.
In practical terms, the way what RBI does matters is the price of vegetables they buy in the market, the interest they get on a fixed deposit, the interest they have to pay if they take a loan for a house. Everyone keeps deposits with the bank. They must be safe. And who is the regulator for that? The regulator for that is the Reserve Bank of India. Reserve Bank manages the foreign exchange reserves of the country. The Reserve Bank manages the debt issued by central and state governments. It affects the average citizen, it affects banks, it affects governments. Reserve Bank of India in particular has perhaps one of the widest range of responsibilities among all central banks in the world, spanning from the payment system and financial inclusion. In that sense, therefore, the Reserve Bank is often described as a full-service central bank. बहुत कम लोग जानते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन 90 साल पहले बना था और तब से लेकर अब तक इसने कई क्राइसिस का सामना किया। आरबीआई की शुरुआत कलकत्ता में हुई, एक प्राइवेट बैंक की तरह, और उन दिनों में भी आरबीआई के पास 5 करोड़ का पेड अप कैपिटल था। शुरुआत में आरबीआई के पहले 2 गवर्नर्स विदेशी थे। फिर आए सीडी देशमुख, आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर, और इनकी गवर्नरशिप के पहले 4 साल में आया इंडिया की हिस्ट्री में तब तक का सबसे बड़ा चैलेंज, पार्टीशन। आजादी के बाद कहानी में आया ट्विस्ट। 1949 में सरकार ने आरबीआई के शेयर होल्डर्स से शेयर्स वापस ले लिए और इस तरह आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। फिर 1969 के बैंक नेशनलाइजेशन और 1970s के ऑयल शॉक जैसे कई उतार चढ़ाव के बाद 1991 में हुआ देश और आरबीआई का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट। In 1991, there was a sense of foreboding that something was going wrong. Fiscal deficit was off kilter, the currency was tumbling. At that time, there was this mild rumor that, what would India do? For most journalists, what the government would do or could do was like a big question mark. नाइनटीज में क्या था कि तभी हम लोग जबरदस्त न्यूज़ कवर करते थे उस वक्त, समझो फायर ब्रिगेड का गाड़ी जा रहा है तो उसके पीछे चले जाते थे। अगर पुलिस का गाड़ी जा रहा है तो पुलिस के गाड़ी के पीछे जाते थे कि क्या है, कहाँ जा रहे हैं। जब मैं इंडियन एक्सप्रेस से निकल के, हमारा एक वीटी स्टेशन के सामने एक चाय वाला है बहुत फेमस, तो वहाँ आके बैठ के हम लोग चाय पीते थे। अचानक एक व्हीकल गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। एज ए न्यूज़ फोटोग्राफर हमको समझ में आ गया कि यार ये तो कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने कहा कि चलो इसका पीछा करते हैं। और हर सिग्नल पे कोई भी व्हीकल उनके आगे भी नहीं था, पीछे भी नहीं था, कम से कम 1.5 किलोमीटर कोई भी व्हीकल नहीं, सिर्फ वो जा रहे हैं। और फिर मैं उनके आगे जाने की कोशिश किया, उनके बीच में जाने की कोशिश किया, तो मुझे वो लोग ये करते थे कि कि इस तरफ जाओ, तो उस तरफ जाते थे। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि क्या जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा था और कोई बताने को तैयार ही नहीं था कि क्या हो रहा है करके। पुलिस की एक वैन जो है वो बंद होती है, तो बाकी सब गाड़ियां आगे चली गई है। बाइक से ही उनके एकदम नजदीक जाके मैंने पूछा, तुम्ही काय सोनं घेऊन चालले का? आणि ते सगळे हसले। एक भी नहीं पुलिस वाला ऐसा था कि जो हंसा नहीं। चल आपला काम कर निकेतून। मैं और थोड़ा आगे गया, तो आगे जाने के बाद 2-3 एम्बेसडर मुझे मना कर रहे थे। एम्बेसडर में ऑफिसर थे और कह रहे थे कि आप पीछे चले जाओ, आओ मत। तो एक समय ऐसा है कि आखिरी में बोल दिया कि इसके आगे आप आओगे ना तो अच्छा नहीं होगा।
तो मुझे थोड़ा लगा कि अभी शायद है ना अपने को टर्न लेना जरूरी है। मुझे ऐसा लगा कि ना एज अ न्यूज़ सेंस कि ये लोग एयरपोर्ट ही जा रहे। फिर शंकर अय्यर को फ़ोन किया। शंकर अय्यर और हम लोग सब साथ में एयरपोर्ट पे गए। If you look from January 1991, the country was at an intersection of political and economic crisis. So it was a very troubled time for India because government had fallen, a new government had been sworn in. There was a bit of rising concern about the fiscal deficit, about the balance of payments and all that. What is balance of payments? As a statement of the financial transactions which any economy has with the rest of the world. 1990s में इंडिया अपनी कई जरूरत की चीजें जैसे गेहूं, एडिबल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर था। इन इंपोर्ट्स की पेमेंट्स कैसे होती थीं? फॉरेन एक्सचेंज से। ये फॉरेन एक्सचेंज हम कमाते थे मसाले, ज्वेलरी, गारमेंट्स जैसे कई और प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके। जब तक एक कंट्री का एक्सपेंडिचर और इनकम बैलेंस्ड है, सब ठीक है। मगर जब खर्चा ज्यादा और इनकम कम हो जाए तो फॉरेन रिजर्व्स कम हो जाते हैं, which is a problem. Now that balance was typically covered through aid or by loans given by governments or by international agencies. There was also a spurt in short-term external borrowings until such time as we were not even able to roll over these borrowings. So all these things were actually making the country more uncompetitive and inflation was increasing. And then came the Gulf War. The price of oil at one point doubled. This actually increased our import bill. There was a serious issue of how to find the foreign exchange to pay for our imports and at the same time service the debt payments which were falling due. As I recall, we had foreign exchange only to cover about 3 weeks of import payment. The moment a crisis builds up in respect of balance of payments, the international agencies would be very reluctant to make loans. You're already not able to service your payment. So who is going to give you additional loans? ये इंडिया के लिए डू और डाई मोमेंट था। नेगोशिएशंस के लिए रिजर्व बैंक से सी रंगराजन और उनकी टीम को आईएमएफ हेडक्वार्टर्स भेजा गया। We needed to assure the IMF that we mean business and we will fulfill whatever we promise to do. There was political instability in India at that time. We were negotiating and we were meeting every morning for negotiations. And by the night, the message came that the Chandrasekhar government fell. That created some murmurs even in the IMF. When they asked with whom were we negotiating, we said you are negotiating with the team which has been sent by the government of India, and we will see that what we have promised and what you have promised will be carried through. एक तरफ आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस जारी थे, मगर क्राइसिस से निकलने के लिए इंडिया को एक इमीडिएट लोन की भी जरूरत थी। आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के साथ 405 मिलियन यूएस डॉलर्स का इमरजेंसी लोन अरेंज किया, पर यह लोन एक भारी कॉस्ट पर आया। सोना घेऊन चालले का? मुझे ये कंफर्म हो गया था कि एयरपोर्ट ही जा रही है। फिर मैंने वहां से सीधे हमारे फोटो एडिटर है उनके घर गया। फिर वहां से शंकर अय्यर जो है वो आए। I got a tip-off that 21,000 kilos of precious metal was being shifted. हम लोग तीनों जन एयरपोर्ट पे गए। In those days, the airport had a limited wall. Nowadays, you can't see the airfield. And we saw this really unusual aircraft, giant aircraft.
So I called the air traffic control just to know what is the route, where is that aircraft going. So the first 2 attempts didn't work. So then I asked a customs officer, is this level of security normal? So he said, no, this is completely abnormal. This whole area has been cordoned off. And then it was very unusual for the layers of security. There was Bombay Police, then the customs, and then the RBI security. The RBI security, interestingly, was closest to the consignment. After some time, I called that person again. So he said that there is a landing for fueling and then it will go to Stansted. So Stansted, I knew, okay, this is going to the UK, to London. I came out of that and I didn't go to the newsroom to file the story. I sat in photography section and wrote the story. All editions then received a message saying that there's expect a story from Mumbai. When this story came out, suddenly this thing, boom, it comes through. The entire Delhi political system, the government, the Reserve Bank, the banks in Bombay, the stock market, everybody was sort of stunned by this because people said that if you're selling gold, that means you're in deep trouble. The idea was mooted by the Reserve Bank. We never had an idea of sale of gold, but it was only a pledging. We did not want to hide the shipment of the gold. I was a joint secretary in the Ministry of Finance at that time in charge of currency printing presses and mints of the government. So it fell to me to sign away that pledge of gold. The magnitude of the crisis, the enormity of the crisis came through. It was, of course, a difficult moment, but we understood that it was absolutely unavoidable. It sent out a very important signal to the lenders abroad that India is willing to do the utmost in order to handle the situation. In those days, for most people, Reserve Bank was just another conservative organization which managed your issue of currency. So whatever the RBI did, people assumed the government was doing. In 1991, the RBI came into public view as an entity which had a strong hand to play in the management of the economy, that it had a responsibility. 1991 में गिरवी रखा सोना आरबीआई ने सिर्फ 6 महीने में छुड़ा लिया और इस गोल्ड के अगेंस्ट मिला लोन देश के लिए संजीवनी बूटी साबित हुआ और आईएमएफ की डील के अनुसार इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया। ये सिर्फ देश की इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि आरबीआई की हिस्ट्री में भी एक लैंडमार्क इवेंट था जिससे कई सारे बदलाव आए। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एंट्री हुई और रुपये की वैल्यू जो पहले आरबीआई डिसाइड करता था उसे मार्केट फोर्सेस को डिटरमिन करने दिया गया। We had earlier a system under which when the cash balances of the government went down, then automatically there will be an issue of ad hoc treasury bills and fill the balance. The relationship between the Reserve Bank of India and the government had to be reoriented. The agreement was rewritten. The Reserve Bank of India should regulate the money supply or the liquidity according to its own assessment. So that is an important change, in a very important way, added to the power and responsibility of the Reserve Bank of India. The financial liberalization of 1991 was kind of a pivotal point in the economic history of this country. The measures which have been taken actually have helped the economy to grow tremendously and lift millions of people out of poverty.
The reforms did pay off in terms of unleashing a lot of dynamism in Indian industry. There is a sense that the economic growth rate accelerated thanks to liberalization. So overall, maybe the dinosaur has become a cheetah, so to say. There's a famous saying, never waste a good crisis. So every crisis also teaches us in terms of how do we prepare ourselves for determining the way forward. 1991 क्राइसिस के बाद से अब तक आरबीआई इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स कई गुना बढ़ा चुका है। दादाजी कैसे हैं आप? दादाजी एक मस्त आइडिया है। ऐसा आइडिया आया है कि कुमार स्वीट्स रातों रात वायरल हो जाएगा। अब से हम जलेबी और रसगुल्ले के साथ बनाएंगे इंडो वेस्टर्न मिठाइयाँ, जैसे कि ठंडाई चीज केक और पाइनएप्पल कलाकंद। कैसा लगा? आ गया ना मुंह में स्वाद? अरे कोई तो बोलो। काम धाम कुछ करना नहीं, बस बड़ी बड़ी बात थी। दादाजी यार, मेरे आइडियाज को कभी तो अप्रिशिएट कर लिया करो। RBI brings back 102 metric tons of gold this धनतेरस। दादाजी 102 metric tons सोना, ये तो बहुत सोना होगा। फिर भी कितना सोना होगा दादाजी? पूरा दिन अपने फोन से चिपके रहते हो, पूछ लो उसी से। सवाल पूछना तो बनता है, क्या हम इस गोल्ड वॉल्ट की एक झलक देख सकते हैं? RBI as a custodian of the gold reserves of the nation. This gold is stored in highly secure locations. Very few have access to it. This is the first time we are opening up the gold vault visually to the country. Each of these gold bars weigh 12.5 kgs. It's quite heavy. The total stock of gold we have is about 870 tons. This is just a small fraction of that. Countries may come, countries may go. Economies may go up, economies may come down, but gold is there forever. It is not just the metal, it is the strength of the country. Change is the only constant. 1935 से आज तक दुनिया बदली, देश बदला। Accordingly, RBI का रोल भी बदलता रहा। हर दौर के लेसन्स के साथ उसने खुद को रीइन्वेंट किया। और चाहे कुछ भी बदल जाए, एक बात कभी नहीं बदलेगी। And that is RBI's promise to protect the interest of every Indian. Today, we are one of the largest producers of currency note in the world. If a currency is imported, the first challenge is that of national security. We didn't want to be dependent on a foreign company for such a basic thing as our currency notes. Then came the game changer. देश के है ख्वाब जो पूरे करना